Hello and welcome everyone. I am Amit from Brain Mentors, and in this video I compiled top 5 JavaScript interview questions. So no more talks, let's start. Null and undefined seems like they do not have any value. तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि दोनों के पास कोई वैल्यू नहीं है. So let's find out the difference. कि इन दोनों में एक्चुअली में डिफरेंस है क्या? So let's start with undefined. Undefined का मतलब है कि आपके पास कोई वेरिएबल है बट उस वेरिएबल में आपने कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करी है. That's why that variable is become undefined. That's why it is called undefined. So let's understand with an example. So in this example, if I specify var cname, I do not assign any value, so it is by default become undefined. So if I do type of cname, it is saying I am undefined. So it means इसका जो type ही है वो कैसा है? Undefined है. Right. So it means if you not assign any value, it is by default become undefined. अगर हम इसे कंपेयर करें null से, तो null एक असाइनमेंट वैल्यू है. इट मीन्स ये असाइन की जाती है वैल्यू. सो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर बिल्ड करता हूँ, लेट्स से आई क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट एंड आई जस्ट नेम्ड इट दिस थिंग एज अ ब्रेन मेंटर्स एंड देन आई स्पेसिफाई द सिटी एज दिल्ली. So when I define the object like this, where obj equals to this name, brain mentors and city is equals to Delhi, तो यहाँ पर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के इनसाइड वी हैव द की of this and we have the value, right? So this is key and this is the value. तो हमने यहाँ पर ऐसा जब ऑब्जेक्ट बनाया, सो बिहाइंड द सीन इन द हीप मेमोरी के इनसाइड हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ. उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास नेम आया जिसमें ब्रेन मेंटर्स एज अ वैल्यू सेट हो गया और साथ में हमारे पास सिटी आया जिसके अंदर दिल्ली सेट हो गया. So key and value is get setted, and suppose assuming this would be stored in this memory address, and this has happened because of this right hand side line. इसकी वजह से ऐसा हुआ. And whatever it done with right hand side line, it is actually assigned to the left hand side. उसके पास 88 आ गया. So 80 is, I mean this obj is just a reference variable because ये refer कर रहा है इस memory address पे. Now the thing is, if I do obj equals to null, because I told you कि when I do this obj equals to null, so null is a assignment value. So it means I assign this null value to this obj. When I assign this null value to the obj, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, सो नल इज लाइक अ कैंची की तरह है, सीजर की तरह है, जिसने इस एड्रेस की पॉइंटिंग को कट कर दिया है. इट मीन्स वी कैन थिंक लाइक दिस ऑब्जेक्ट इज लाइक अ बैलून और उस बैलून का धागा हमारे पास है ओबीजे में. तो अगर मैं नल लिखा तो इट मीन्स आई कट दिस थ्रेड, मैंने इस धागे को काट दिया. सो नाउ इट डज नॉट हैव एनी दिस एड्रेस एंड नाउ इट हैज़ समथिंग कॉल्ड नल एज अ रेफरेंस. So it has a null, so it means it do not pointing to any memory address. So that's why null is some assignment value. When you assign null, it means you are assigning the null mostly on the object side. It means you are assigning to the object. So when you check the type of null, it is always an object. Right? So this is a difference between the null versus undefined. So let's check this out. So when I define this object, it has this object and we can pick any value, obj.name. But if I do obj equals to null, if I do this obj equals to null, so it means now it is no longer pointing to this memory, that's why it is coming null. And if I do type of obj, so it is saying I am an object. So null has a type obj, but when you check type of, let's say null, so it is saying I am an object, but you check type of undefined, it is saying I am undefined. Make sense?